Hi guys, welcome back to Sketch School of Art and Creativity. I hope that all of you are doing well. So today's video is going to be a very important video, and I think I have not shot any video from such a long time. So I'm also shooting a video after a very long time now because you were also busy, like mostly the 12th grade students were busy for their board examinations, and I hope that your board examinations are also going well. So all the best for your boards as well. But अभी board examinations बहुत ही जल्दी over होने वाले हैं, and then a new chapter is again going to start, which you have to work hard for, because then you have to prepare for entrance examinations, which is NATA and JEE B.Arch, JEE Mains Paper 2. So JEE Mains Paper 2 तो होने ही वाला है April में, so there's not much time left now. But after the boards, you will have to give, the dedicated 15, 20, whatever days, just dedicatedly for the JEE Paper 2 preparation. But today's video is not for JEE Paper 2. We are talking about NATA, right? So the NATA registration has started, and we will talk about the dates, we'll talk about the form filling. So we will talk about every single thing that you need to know before you register for the examination, because there are many dates that have come now. So we will also talk about that which dates will be preferable for you, कि आप कौन से dates में examination दो, because you have 3 attempts and you have to plan the dates accordingly, because examination is going to happen on every weekend. Okay, and it's the first time that this is happening कि हर weekend पे exam हो रहा है. Now there can be some pros and cons for this also, because there are so many examinations, so many different kinds of papers will be there, so luck will also play a factor, because definitely the day you are giving the examination, the paper you're going to get, maybe that paper comes a little bit difficult, maybe that paper comes a little bit easy. So yes, the luck factor will also be there. एंड बिकॉज बहुत ही स्मार्टली हमें अपने डेट्स को चुनना पड़ेगा while we are registering. Also, while filling the form, some students are facing some problems in form filling regarding the email and the verification. Okay, so I will also talk about that, so that after you watch this video and then you fill the form, you will not face any problem, and that will happen smoothly. So that is why it's important that first you watch this entire video completely. I will guide you through the form filling process, then we will talk about the date selection, and then we will also talk about that how you can start with your preparation of NATA examination. And because you have to focus regarding this, after your board examination, you have to completely dedicate your focus regarding the architecture entrance exam preparation if you want to become a very good architect. Because if you will not prepare for the entrance examinations, you are not going to get into the top colleges of India. ऐसा कोई बच्चा नहीं होता जो बिना प्रिपरेशन के तुक्का मार के टॉप कॉलेज में पहुंच जाता है. ऐसा कोई नहीं होता. Like everybody prepares and then gets into the dream college or the top college or the top architecture institutions of India. So now you will say that why it is necessary. In one line, I will say, if you have decided that you want to do architecture in future and architecture is your dream, better do it from a very good college. Better do it from the top college of India. That is very important for this field at the current scenario of India that we are looking towards. तो बहुत important है preparation करना, ठीक है? तो उसके बारे में भी मैं guide करने वाली हूँ. So now without much introduction, let us get started with the video. So to register for the NATA examination, first you have to visit the official website of NATA, which is www.nata.in. I will also provide the link of the website in the description box below. Then you have to click on NATA 2024 registration, and then you have to click on sign up. Okay, so first you need to sign up. Now in this sign up option, you will be asked a few details, and you have to be very careful while filling these details. I have seen some students who make some typing errors while typing their name and their parents' name. तो फिर बाद में admission के time पे you will face problems. I've also seen some students who don't write the exact name of their parents, which is there in the Aadhaar card. तो आपको याद रखना है कि जो आधार कार्ड में आपका और आपके पेरेंट्स का नाम लिखा हुआ है ना, you have to use that same name only and not make any typing error. Okay, in the email address also, it's very important, so please note over here that you have to use an email address which you are using currently and it is already logged in, because you will get a verification email later आफ्टर दिस स्टेप. तो काफ़ी लोग जो ईमेल एड्रेस गलत डाल देते हैं या फिर मे बी अभी लॉग्ड इन नहीं है, यूजेबल नहीं है, वो कुछ ईमेल एड्रेस डाल दिया, तो आगे आप साइन अप
नहीं कर पाओगे, फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। आधार नंबर एज यू कैन सी ओवर हियर, आधार नंबर के आगे स्टार मार्क नहीं है रेड कलर का, दैट मीन्स इट इज़ ऑप्शनल। सो आई विल रिकमेंड यू कि आधार नंबर मत ही डालो, बिकॉज कुछ बच्चों का मेरे पास फ़ोन आया एंड दे वर सेइंग दैट इफ़ दे हैव ऑलरेडी पुट द आधार नंबर एंड अगर कोई भी मिस्टेक हो रही है तो दोबारा साइन अप करने में सेम आधार नंबर से साइन अप नहीं हो रहा है। सो इट्स बेटर दैट यू डोंट पुट द आधार नंबर, बस ईमेल आईडी और नाम वगैरह करेक्टली डालना। सो ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट यू आर फिलिंग ओवर हियर ना, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट इट इज़ वेरी करेक्टली फिल्ड। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो टाइम लेके अपना आराम से फिल करना, देन क्लिक ऑन साइन अप आफ्टर ऑल द डिटेल्स आर फिल्ड एंड this kind of a page will be visible. Here your application number will be visible, then the user ID will be visible, which is your email, ठीक है, name of the candidate will be visible and your mobile number. इन चारों डिटेल्स को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, प्रॉपर आपका एप्लीकेशन नंबर अभी आ चुका है। बट आफ्टर दिस स्टेप इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दिस ईमेल दैट यू हैव फिल्ड ना, यू हैव टू ओपन दैट ईमेल एंड यू हैव टू वेरीफाई, दैट इज द नेक्स्ट स्टेप। तो दैट इज वाई आई वाज सेइंग कि ईमेल आईडी करेक्टली डालना। देन ओपन द ईमेल एंड यू मस्ट हैव रिसीव्ड एन ईमेल, ओके। नाउ हियर यू विल सी दिस क्लिक हियर टू वेरीफाई एंड देन सिंपल क्लिक करके वेरीफाई कर लो अपना ईमेल एंड देन यू नीड टू लॉग इन। सो हाँ, ये भी मैं बताना भूल गई, तो द पासवर्ड दैट यू विल सेट ना while you are signing up, please be very careful about the password also, ठीक है। पासवर्ड भी याद रखना, you if you want you can just note it down somewhere so that it like you don't create like there's no problem later, okay। so अपना email डालो जो आपने fill किया था while you were signing up, वो email आपको डालना है proper and then you have to enter the password that you had already set। तो फटाफट से एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन वी आर सिंपली फिलिंग दैट एंड देन सिक्योरिटी कोड भी आप प्रॉपर डालना। कब मैंने तो जब लास्ट टाइम मैं कर रही थी फिल, तो यहाँ पे भी कुछ दिक्कत आ रही थी, तो जो लिखा है वो प्रॉपर डालो एंड देन सिंपल आप अपना लॉग इन करो। नाउ द मेन थिंग विल स्टार्ट बिकॉज नाउ व्हेन यू हैव लॉग्ड इन, नाउ प्रॉपर एवरी डिटेल यू हैव टू फिल आउट वेरी करेक्टली, लाइक your full name, your father's name, your mother's name, your mobile number, your date of birth. Make sure that everything is correct and there is no issue later, because कभी कभी क्या होता है ना, देखो करेक्शन विंडो आता है, ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है करेक्शन विंडो में करेक्ट करने के बाद भी फॉर्म में करेक्ट नहीं होता है, सो देयर माइट बी सम ग्लिचेस लेटर, सो इट्स बेटर टू बी वेरी केयरफुल इन दिस इनिशियल स्टेज ओनली, ओके। नाउ देन द एड्रेस पार्ट विल कम. This is also very important, so you have to fill out the address and everything very properly and correctly. Also you have to understand कि आपका जो, चलो डेट्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट एड्रेस वगैरह आप प्रॉपर फिल कर लेना, ठीक है। आई विल जस्ट क्विकली fast forward this part right now because I hope that all of you will be able to fill pin code and everything, okay. Then in the next step you will be asked your educational qualification and your marks etc. So obviously if you are appearing right now and if you are in 12th grade right now, तो आप अपने marks इसमें नहीं डालोगे, ठीक है, तो फिर वो ऑप्शन भी आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसा कुछ ये नहीं है कि आपको मार्क्स डालने ही हैं 12th क्लास के, तो अगर आप अपीयरिंग हो तो डेफिनेटली यू मस्ट हैव नॉट गॉट योर 12th बोर्ड्स मार्क्स राइट नाउ, so that you will not have to fill, okay। so just according to whatever status you are at this stage, वो सब आप अपना इसमें फिल करोगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले में, ठीक है। एंड गाइज ये भी थोड़ा सा मैं बता दूँ फॉर लेटर थिंग, अगर आपने कुछ गलत मार्क्स भी डाल दिया या कोई डिप्लोमा में है और उसको समझ नहीं आ रहा है कि मार्क्स कैसे डालने हैं, तो इतना ज़्यादा इसको सीरियसली मत लेना, बिकॉज ये जो पार्ट है ना मार्क्स का, ये फॉर्म से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो एट द टाइम ऑफ एडमिशन इट डजेंट रियली मैटर, ओके। वो फाइनल आपका ओरिजिनल मार्कशीट जो रहेगा, चाहे डिप्लोमा का हो चाहे बोर्ड्स का हो, उसके थ्रू ही आपका एडमिशन होगा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। सो यहाँ पे आप काइंड ऑफ कुछ भी डाल दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा परेशान मत होना कि मार्क्स वगैरह कैसे फिल करना है, डजेंट रियली मैटर। एट द टाइम ऑफ एडमिशन यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम इफ़ देर इज़ सम डिस्क्रिपेंसी ऑल्सो, या फिर कुछ मार्क्स अलग आपने डाल दिया या गलत मार्क्स डाल दिए, तो भी इतना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ओके।
बट ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है, इस चीज़ का, क्योंकि काफ़ी लोग इसमें ज़्यादा परेशान होते हैं कि यार मार्क्स कैसे डालें, तो इसका समझ लेना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप विल बी योर फोटो अपलोड एंड योर सिग्नेचर अपलोड. So definitely this is also important part. Photo, please try to upload your current and recent photograph. अगर आपके पास नहीं है तो get it clicked from somewhere. बचपन का मत अपलोड करना, ठीक है, कई बार उसमें भी थोड़ा इशू आ जाता है. एंड देन जस्ट रीसाइज इट एंड यू कैन सिंपली upload it. Okay, if you are facing any problem in form filling, you can also call us and we will help you out. ये आपका जब हो जाएगा तो उसके बाद आपका एक प्रिव्यू आएगा एप्लीकेशन फॉर्म का, ठीक है. जस्ट चेक एवरीथिंग दैट वेदर यू हैव फिल्ड इट करेक्टली और नॉट, एंड व्हेन यू विल चेक एवरीथिंग देन फाइनली प्रोसीड टू द पेमेंट पार्ट. फिर आपको पेमेंट पार्ट के लिए प्रोसीड करना है, ठीक है. इट इज़ ऑनलाइन सो इट विल नॉट बी मेजर इशू. अब अपना पेमेंट जब करोगे कंप्लीट, देन लास्टली in the last stage you will see this kind of a page where they will ask you to select the exam date. Okay, now this is also very very important कि आप कौन कौन से डेट पे एग्जाम दोगे. नाउ यू ऑलरेडी नो दैट यू आर गोइंग टू हैव 3 attempts which you can give, so you will थिंक कि हम कौन सा डेट चूज करें एंड कैसे प्लान आउट करें. सी गाइज, एनीथिंग इज़ फाइन, बट व्हाट आई विल रिकमेंड यू दैट फर्स्ट थोड़ा सा इनिशियल डेट्स में ना, फर्स्ट 5 या 6 जो डेट्स हैं, फर्स्ट 2 वीक्स में आप मान लो, ट्राई टू गिव द एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट 2 वीक्स टू गेट एन आइडिया दैट हाउ द एग्जामिनेशन इज कमिंग, आपको कैसे प्रिपेयर करना है एंड एट वॉट स्टेज यू आर, बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू डायरेक्ट योर प्रिपरेशन. तो इनिशियली आप फर्स्ट अटेम्प्ट कुछ इनिशियल डेज में सेलेक्ट करो, बहुत एंड में तीनों अटेम्प्ट्स मत करना, बिकॉज एग्जाम दे के भी बहुत चीज़ें पता चलती हैं दैट यू नो हमें इस टाइप से करना चाहिए था एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट, या फिर मे बी टाइम मैनेजमेंट में कुछ दिक्कत हो गई, या ये पार्ट मेरा स्ट्रॉन्ग है वीक है. तो इनिशियली एक अटेम्प्ट आप दो जो कि इनिशियल डेज पे हो, एंड देन लेटर 2 अटेम्प्ट्स ना यू कैन गिव एट द एंड डेट्स, नॉट द वेरी एंड बट अप्रॉक्सीमेटली जो लास्ट के डेट्स हैं आप उसमें चूज कर सकते हो, ठीक है. प्रॉपर प्रिपरेशन करने के बाद फिर लास्ट के 2 अटेम्प्ट्स आप दे सकते हो. सो दैट इज व्हाट आई विल रिकमेंड एंड सजेस्ट यू, ओके, एंड टू माई स्टूडेंट्स ऑल्सो, बिकॉज देखो मैं आपको बताऊंगी यूट्यूब पे कि ये क्वेश्चन आए थे, ऐसा पेपर आया था, बट खुद पेपर देना और सिर्फ क्वेश्चंस को देखना 2 अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है. तो आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो आपको हेल्प करेगा टू शेप योर प्रिपरेशन इन अ मोर बेटर मैनर, ठीक है ना. तो इसी वजह से ये मैं रिकमेंड करूँगी. बाकी आप अपने हिसाब से कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है. एंड थोड़ा सा लक पे भी रहेगा ये, बिकॉज देर आर सो मेनी डेट्स एंड सो मेनी डिफरेंट पेपर्स विल बी देयर. सो डेफिनेटली समटाइम्स द पेपर माइट कम ईजी, समटाइम्स इट माइट कम टफ. तो वो तो थोड़ा सा रहेगा, और थोड़ा सा अनफेयर या लक बेस्ड आप कह सकते हो कि इस बार का नाटा एग्जाम होने वाला है. बट दैट शुड नॉट बी अ कंसर्न बिकॉज यू एनीवेज हैव टू मेक योर प्रिपरेशन एट द टॉप नॉच लेवल. नाउ आई हैव वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू से टू यू गाइज. तो चलो अभी मेरे से मिलो नेक्स्ट पार्ट में वीडियो के. Alright guys, so I hope that you have understood completely that how you have to fill the form for the NATA and also regarding the date selection. So everything that you need to know regarding the registration I have told you in this video. So after watching this video now, you can go to the official website of NATA and you can fill the form and apply for the examination. Now let's talk a little bit about the preparation. Now there will be 2 types of students. One who will think that okay, we have decided that you want to do architecture, so just गिव द नाटा एग्जामिनेशन, ठीक है, कोई भी मार्क्स आ जाए, कोई भी कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे घर के आसपास जो भी सही सा लगेगा. एंड देयर विल बी अनदर सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु विल से दैट नो, आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द नाटा एंड द जेईई एग्जामिनेशन सो वेल दैट आई गेट इनटू द टॉप आर्किटेक्चर कॉलेज ऑफ इंडिया. नाउ आई विल सजेस्ट यू, जो ये दोनों कैटेगरीज हैं, all the students who are in this category right now, please shift towards the another category, because trust me, I am from this field from so many years and I can 100% with a guarantee tell you that it is very important to get into a good college if you want to do architecture in India. The reason for this is basically that architecture is a very practical course. It's a very practical course. You cannot study it through books, okay? Because
see, what happens is, if the student is intelligent enough, no matter in which college he or she is, he can read a lot of books and maybe self-explore and become good in that career, right? But in architecture, it doesn't happen that way, because it's a practical course. You need good working architects, working professionals to teach you regarding this field, and then only you become well versed with the architecture education, which you don't get somewhat in the average colleges. That's what I have seen, and that's what it is true. In the average colleges, you don't get exposure to that successful architects and the faculty members also, which you will get. Maybe you can get good faculty members, but it's always a maybe. It's never a sure shot. So if you talk about sure shot good education, you will get into the top colleges for sure, 100%. And if you get a good education, like suppose there's a very successful architect from which you have studied and which you have worked under that particular architect, 110%, you know, being very knowledgeable and being a person who understands a lot of things regarding this field and very knowledgeable, you're bound to be successful. Like, nobody can stop you. Understand that you're bound to be successful. सो आई होप कि सभी लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनको अच्छे पैसे कमाने, कोई ऐसा नहीं होता है ठीक है कितने भी पैसे कमा लिए चलेगा, नहीं यार. इफ यू हैव गॉट अ लाइफ, जस्ट वर्क सो हार्ड एंड गेट टू योर बेस्ट पोटेंशियल. ठीक है, सबको क्यों आपको मतलब उस टॉप लेवल में नहीं पहुंचना है? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट. एवरीबडी शुड टेक द इनिशिएटिव एट दिस स्टेज. It's not that difficult also to prepare and even score top marks in these entrance examinations. If you talk about last year result, in JEE B.Arch, 1/3 of students from SSAC scored the top marks and got into the top colleges. And from NATA, 1/4 of the students scored the top marks and got into the top colleges. 1/3, 1/4. इतना डिफिकल्ट. हर 3 में से 1 बच्चा, 4 में से 1 बच्चा नाटा में. और अभी तो नाटा का भी 1/3 के क्लोज जाएगा, बिकॉज नाउ इन नाटा एग्जामिनेशन द पैटर्न हैज चेंज, द ड्राइंग इज बैक वेरी सिमिलर टू जेई, राइट? सो अभी तो प्रिपरेशन और बेटर होने वाली है नाटा की. अभी रिजल्ट्स और बेटर होने वाले हैं इस साल, होपफुली, और होंगे, बिकॉज एवरी ईयर द रिजल्ट्स ग्रो. इट्स नेवर दैट द रिजल्ट ड्रॉप्स. कभी भी कोई कोचिंग होता है उसका रिजल्ट ग्रो ही होता है, बिकॉज अगर सही से सब कुछ मैनेज्ड हो तो डेफिनेटली यार हम ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं. वी नो दैट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन कम एंड देन द प्रिपरेशन गोज वेरी वेल. नाउ एट दिस स्टेज आई कैन डेफिनेटली से दैट SSAC Institute is the best platform for you to prepare for architecture entrance examinations. But I never say that you directly enroll in our course. That is not my motive. Even the YouTube channel right now that you are seeing, it's basically made to help all the architecture aspirants, because I have gone through this personally. If you want to know my story, there's also a video regarding the story of SSAC. You can watch that to connect with me more and understand that मैंने क्यों SSAC start किया और क्या reason था, so that you can understand these things in a more better manner. But coming back to what we were talking about regarding the preparation, now that you have understood the preparation is important, ठीक है, but क्या तरीका होगा प्रिपरेशन करने का? Some students will opt for self study, some students will opt for coaching. Now, if you are opting for self study, it is very difficult for you to crack these examinations because of the simple fact that architecture entrance examinations is very different from your school studies. Anything that you study in your school till now will not be there in the examination. It's very different. Be it the drawing part, be it the aptitude part. दोनों ही. aptitude part बात करें बहुत architecture based रहता है. What you study in the college. Okay, so what people study in architecture college, how can you possibly know that without any guidance? It's not possible. Okay, and secondly, for the drawing part also, the preparation is very different. Now, I cannot tell you in this video entirely that what you have to study in the drawing part. For that, you have to come and talk to me in the live session, okay? Because that's a huge thing. तो अगर मैं बताने लगी तो पूरी वीडियो 2, 3, 4 घंटे की हो जाएगी. तो लाइव सेशंस में बहुत easily समझ आता है that what is the right way to prepare. And you have to understand that SSAC, we as an institute are here to help you 110%. Any architecture aspirant, चाहे आप हमारे कोर्स में आओ ना आओ, doesn't matter. We are here to help you and you have to just trust me on this, that we have helped every single person who has approached us or called us. Every person. Okay? So what you have to understand is कि
अगर आपको क्लैरिटी नहीं है एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के बारे में, सिलेबस के बारे में, हाउ टू प्रिपेयर, हाउ लास्ट ईयर वी मैनेज टू प्रोड्यूस सो मेनी टॉपर्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, ओके। एंड यू विल थिंक दैट अब ये कैसे होगा, मैं बोलूँगी यूट्यूब पे वीडियोस देख लो, नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके हमारी वीडियोस को छान मारो सारी, नो, you have a simple thing to do. Just contact us on WhatsApp, call, or via our website. So there are 3 ways you can contact us. Either you can call us on this number, or you can WhatsApp us, or you can directly book a free demo class from our website. Link is in the description. Okay. Now, what do we provide? Basically, we provide 2 major things. You have to understand that. First thing is the free career counseling. Now, this counseling is so important and so many students have benefited from it. I can't tell you enough. Now, in this free counseling, it's a one-on-one session with an architect, and you are going to get a chance to interact with an architect. Any questions you have in your mind, any question, आपको कुछ भी पूछना है, नाटा के बारे में पूछना है, जे के बारे में पूछना है, एग्जामिनेशंस के बारे में पूछना है, आर्किटेक्चर इज अ करियर इफ यू वांट टू आस्क, ठीक है, whatever personal doubts you have, the architect is going to clear that. There's no time foundation also. So first, from our side, we will tell you everything that you need to know, and then it will come to your doubts. So I think this is the part where you're going to get 100% complete understanding regarding this field, okay? And then you take our free demo classes. Again, we are going to give 3 demo classes to you for every subject, maths, aptitude, and drawing, and we will tell you in detail that how to strategize your preparation for all these 3 parts. And then if you feel that we are going to help you in some way, and if you like our classes, then you can definitely enroll in our courses. That is obviously an option. Now, for some students who don't have any idea regarding our courses and what do we do and how we prepare the students via our courses, so basically SSAC stands for Sketch School of Art and Creativity, and we prepare students for architecture entrance examinations, right? We are an online institute. We only take online classes. There's no offline institute that we have currently. There are many chances that also have got to open offline centers, but I never do that, because online education for architecture entrance preparation, I think it's the best. You know, it can never compete with online. You talk about the education understanding, it is very high, because you get to learn through 3D models, presentations, and all that, right? You talk about interaction, again, you know, you can call the teacher anytime, you can write in the chat box, you can chat also, so it's very convenient also in that. Even if you're a shy person in general, you know, it's very good for you, because you get to stay connected with the teacher and ask any of your doubts without feeling any discomfort. So that's one thing. Secondly, all the sessions are recorded, and you get the recordings of all our live classes. You get strategized ebooks which are in presentation format. Then you get online tests, like just like the examination, and you get mock tests also, which are also just like the examination. Test which I'm talking about, those are topic tests. Like for example, we have completed Egyptian architecture, so you will get a test on that. Okay, so this is how we work, and you know, there's a bunch of things that I need to tell you, so I will tell you while, you know, you come in our counseling session and in our free demo classes. You will get to learn a lot. So I will recommend you just call us or WhatsApp us. That's the easiest. Or maybe if you don't want to call or WhatsApp, you can just book directly a free demo class from our website, and we will guide you through everything. So again, I will repeat, we are here for you to help you. You join us or you don't, doesn't matter. You as a person, as an architecture aspirant, can 100% with a free mind contact us and clear all your doubts, because unless and until you are clear about the examinations ना, you can never prepare well. Never. ऐसा नहीं है कि आप direct preparation start करो. You will go on the wrong track. You have to be on the right track to get in the top marks. That is why we have produced so many toppers, because of the right guidance mainly. Okay, so just contact us, and then I will speak to you in our, maybe in the live demo class, or maybe in the personal counseling session. So definitely I'm looking forward to speaking with all of you. And yeah, now that the video has ended, you can go and register for the examination, and let us meet in the next video. Don't forget to subscribe to the channel for more amazing videos, which are going to come very, very soon on many topics. We've already shot the videos, now we will upload them. So many exclusive videos are coming very soon, so make sure that you're subscribed and you've pressed the bell icon. So that was it for today's video, guys, and let us meet in the next video. Tab tak ke liye, bye bye.